Namaskar to all. I'm Himanshu Agrawal, and today I'm gonna discuss about financial management. Basically, we have in this introduction. What is introduction? Introduction. Financial management relates to a managerial activity that is concerned with planning and controlling of the firm's financial resources. Basically, in this we plan and control. What do we plan, or what do we have to control? Basically, this is a thing which we have to control and plan for. फाइनेंशियल रिसोर्सेज को प्लान करना, उनका कैसे यूटिलाइज करना है, उनको कैसा मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है, जैसे वेस्टेज ना हो, उससे मतलब उस तरह से यूटिलाइज करते हुए उसको आगे बढ़ना, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज. After then we have basically financial management arose through economics. Basically in 1890 it is of a branch of economics. Basically it belongs to economics till 1890. What is the scope of finance? तो it includes all financial activities such as definitions दे रखी हैं, जो वो सभी फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन करती है, ऑल आर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इन दिस लीज ऑब्लिगेशंस वी विल डिस्कस लीज ऑब्लिगेशंस. व्हाट आर लीज ऑब्लिगेशंस? इन दिस वी हैव टू पर्सन्स, लेसर एंड लेसी. लेसर इज जो कि अपनी एसेट्स को यूज करने के लिए देता है, एंड लेसी इज जो कि obtain करता है राइट्स को उस पर्टिकुलर लेसर की जो एसेट है उसको यूज करने के लिए. द लेसी obtains a right to use the lesser's asset for an agreed amount of rental over the period of lease. in this एक अमाउंट एग्री किया जाता है जो कि लेसी को पेड करना होता है लेसर को. लेसी विल पेड अ पर्टिकुलर अमाउंट टू लेसर for what? For using a particular asset of lesser. After then capital expenditure. What are capital expenditure? Capital expenditure are those expenditures which are done for buying assets. Assets may be also capital expenditure are also called investments. अब एक फर्म जब इन्वेस्टमेंट करती है for buying assets, assets are many types. Assets are of many types. तो उसको जब बाय करने के लिए, जब उसके लिए जो एक्सपेंडिचर करती है, दोज आर इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर. उसके बाद वी हैव रियल एंड फाइनेंशियल एसेट्स. देयर आर टू टाइप ऑफ एसेट्स इन रियल एसेट्स. फर्स्ट, टेंजिबल रियल एसेट्स एंड इंटेंजिबल रियल एसेट्स. टेंजिबल रियल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच यू कैन टच. बेसिकली प्लांट रहा, मशीनरी रही, ऑफिस रहा, दीज आर दोज एसेट्स विच आर which you can touch in actual thing. फैक्ट्री, फर्नीचर एंड बिल्डिंग, ये सब वो फिनोमेना है जो कि बेसिक है बिजनेस का. अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, यू नीड अ प्लांट, यू नीड अ मशीनरी फॉर पर्टिकुलर एक्शन, यू नीड अ ऑफिस इन विच यू कैन ऑपरेट, फैक्ट्री, फर्नीचर एंड बिल्डिंग. आफ्टर देन इंटेंजिबल एसेट्स. इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच यू कांट टच. बेसिकली टेक्नोलॉजी, टेक्निकल नो हाउ, कितनी साउंड है एक ऑर्गेनाइजेशन एक टेक्निकल नॉलेज के अंदर. आज के ज़माने में हम सब जानते हैं दैट टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंग रैपिडली. सो पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स, हाउ मेनी पेटेंट्स आर लिस्टेड ऑन द नेम ऑफ फर्म, these are considered in the real intangible real assets. Copyrights. Financial assets basically are those assets which are also called securities, instruments and financial papers. These include shares, bonds, debentures. Basically financial assets are of two kinds, or the financial assets are issued in two markets, primary markets and secondary market. Not issue, but these securities are found in two markets, primary capital market, secondary capital market. Primary capital market is that market in which a firm firstly issue of funds, issue assets to raise funds, necessary raise funds. ठीक है. So in secondary market पहले जब फर्म जो अपनी जो एसेट्स हैं उनके लिए रिसोर्सेस लेने के लिए
अपनी फाइनेंशियल एसेट्स इंस्ट्रूमेंट के तौर पे प्राइमरी मार्केट में लॉन्च करती है, जिसे कि हम आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसके अंदर फर्म को नेसेसरी फंड्स एक्वायर करना होता है। तो पहली बार जो इशू किया जाता है जो सिक्योरिटीज होती हैं वो किस मार्केट में इशू किया जाता है? दैट मार्केट इज कॉल्ड प्राइमरी कैपिटल मार्केट। एंड सेकेंडरी कैपिटल मार्केट इज दैट मार्केट when a particular securities or stock of securities are issued in primary market already, then it goes in secondary market for trading purpose in individuals or say in investors existed in the particular country.